Hello students, welcome back to Science Online class. This is Pratima Vishwakarma here. Students, in our previous video, we have seen that what is magnet, how many poles does magnet have, and also how magnets were discovered. Okay students, now in this class, we will see more properties of the magnet. So an interesting property of magnet is that magnet, when a bar magnet suspended freely and when it comes to rest, it always comes to rest in a particular direction. For example, see, this is a stand and on this stand a bar magnet is suspended freely. This is a bar magnet. Okay, so this bar magnet, when it comes to rest, it always comes to rest in a particular direction, and what that direction is, that direction is north and south. North and साउथ अंडरस्टूड स्टूडेंट. सो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट जब भी रेस्ट पोजीशन पे आता है तो ऐसे डायरेक्शन में रुकता है जो कि नॉर्थ साउथ इंडिकेट करता है. ठीक है, सो सी हियर, this is a bar magnet. Okay, this bar magnet freely suspended here. Okay, now this bar magnet is rotating, but when this bar magnet come to rest, it shows north south direction. This is the property of the magnet. Okay, so magnet always shows directive property and the direction is north south direction. अंडरस्टूड स्टूडेंट. सो आपको आप कैसे पता कर पाओगे कि ये नॉर्थ है ये साउथ है? तो यू हैव टू मार्क एट वन एंड ऑफ द मैग्नेट, दैट इज एन, एंड वन एंड ऑफ द मैग्नेट इज एस. ओके, सो व्हेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है तो अदर टू डायरेक्शंस यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो this is how the bar magnets shows north south direction. So the end of the magnet which point towards north is called north seeking pole, and the end of magnet which point towards south is called south seeking pole. Understood students? So this property of magnet is very useful. For centuries, travelers, sailors use this magnet to find directions which they always carried with them. ट्रैवलर्स और सेलर्स इसी मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे. हमेशा अपने साथ ये मैग्नेट को रखते थे ताकि उनको डायरेक्शन का पता चल सके. फॉर एग्जाम्पल, होंग टी कौन था? ही वॉज द एम्परर ऑफ चाइना एंड ही हैड अ चैरियट. चैरियट मीन्स व्हाट? चैरियट मीन्स रथ. ओके, तो जो चाइना का एम्परर था उसके पास क्या था? चैरियट था, रथ था. एंड दिस चैरियट हैव अ स्टैचू ऑफ लेडी with its extended arm. Okay, so when the chariot is at rest, the statue of lady with its extended arm points always in south directions. That's why the emperor used this to locate directions when he moves on chariot to new places. Understood students? Later on, इसके बाद a device called magnetic compass has developed, which is also based on properties of magnet. So let us study magnetic compass with the help of figure. Okay students, so this is the figure of magnetic compass. A magnetic compass consists of a magnetized needle pivoted inside a small box with a glass cover on it. आप देख सकते हैं कि एक निडल है, मैग्नेटाइज्ड निडल है जो कि बॉक्स के अंदर फिक्स्ड है. ओके, नाउ द मैग्नेटिक कंपास हैज़ अ डायल ऑन विच डायरेक्शंस आर मार्क्ड. आपको डायरेक्शंस भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें मार्क किया हुआ है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ.
The magnetized needle when comes to rest indicates the north-south direction. As I already told you that when magnets come to at rest, it always indicates north-south direction. The north pole of a magnetized needle is always painted in a different color for easy identification. तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ का जो पेंटेड नॉर्थ पोल को पेंट किया हुआ है एक अलग कलर से, किस लिए? फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन. ओके, नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस द मैग्नेटिक कंपास इज टेकन टू दैट प्लेस. अगर किसी भी जगह की डायरेक्शन हमें पता करनी है तो मैग्नेटिक कंपास को उस जगह पे लेके जाया जाता है. एंड द नीडल ऑफ द कंपास स्टार्ट्स रोटेटिंग टिल द पेंटेड एंड रिचेस नॉर्थ मार्क्ड ऑन द कंपास. तो नीडल का जो पेंटेड एंड है वो तब तक रोटेट करता है जब तक कि वह कंपास के नॉर्थ मार्क तक पहुंच नहीं जाता. सो दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द प्लेस इज लोकेटेड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक कंपास. Students, you have learned that magnet have two poles. So see figure, this is a magnet. Magnet have two poles. One is north pole and another one is south pole. So what happens if you cut this magnet into two halves like this? If you cut this magnet into two halves, or suppose if this magnet is broken, then what happens? So the each half of the magnet becomes a complete magnet. Each half of the magnets become a complete magnet. Okay, each half of the magnets become a complete magnet. For example, this is north pole, then this behaves like a south pole, and this will is the north pole. Understood? Again, if this broken magnet is divided into two parts, then again each half behaves like a complete magnet. Okay, complete magnet. So magnet always exists in pair. So this tells you that magnet always exists in pairs. Okay, this is north pole, this is south, and this is north pole, this is south. So this tells that magnet always exist in pair. This is the second property of magnet. Understood, students? So first property, magnets shows directive property, and magnets have directive property, and second property is magnet always exists in pairs. Understood, students? Okay, students. Now how can we make a magnet? Okay, this is our next topic. Make your own magnet. Make your own magnet. So how can we make a magnet? So what you have to do? Take a soft, take steel or a pieces of iron. Now, suppose we have to make this steel or pieces of iron as a magnet. So how can we make this steel and iron as a magnet? So what we have to do? So take steel or pieces of iron. So this is, suppose we have taken steel or a pieces of iron. Okay. Now mark one end on steel as N. Start here. Okay. Now we have to make this steel as a magnet. हमें इस स्टील को मैग्नेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? टेक अ बार मैग्नेट लेना है, और बार मैग्नेट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पे रब करेंगे. सो रब बार मैग्नेट ओवर दिस स्टील इन दिस डायरेक्शन along its length. Okay, so suppose we have started rubbing bar magnet on the steel in this direction or along its length. Then from here lift the bar magnet, and then again comes to this. Okay, like this. So you have to repeat this cycle up to 30 to 40 times. 30 to 40 टाइम्स तक हमें इसको बार मैग्नेट को स्टील पे रब करना है. एंड आफ्टर दैट what we will observe that this steel becomes magnet. So how can we prove that the steel becomes magnet? When the iron fillings placed near to this
steel, the iron filings get stick to the steel and this shows that the steel becomes magnet. आ रहा है समझ में? आप स्टील को या आयरन को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? आपको क्या करना है, स्टील लेना है और स्टील के एक एंड पे आप मार्क कर दीजिए, जैसे नॉर्थ हमने मार्क कर दिया, एन लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बार मैग्नेट को लीजिए और बार मैग्नेट को आपने यहीं से स्टार्ट किया है तो यहाँ से स्टार्ट करिए, इसके पूरे लेंथ में रब करिए, ठीक है, इसी डायरेक्शन में रब करिए, फिर यहाँ से बार मैग्नेट को उठाइए, फिर आइए यहाँ पे, फिर से रब करिए और ये कब तक करना है, 30 से 40 बार करना है, ठीक है, 30 से 40 बार इसको ऐसे ही रब करना है, रब करना है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल फाइंड दैट द स्टील, आपका जो ये स्टील रहेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब आप इसको कैसे प्रूव करें कि ये स्टील आपका मैग्नेट हो गया है, आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके जाइए, अगर वह आयरन ऑब्जेक्ट को ये स्टील अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट दिस स्टील बिकम्स magnetized. This is how you can make your own magnet. Understood, students? Now you can make your own magnetic compass also. How to make magnetic compass? See, magnetic compass. Magnetic compass. How to make magnetic compass? So for making magnetic compass, what you have to do? Take a tub. Okay, take a tub. Now fill this tub with the water. With the water. Now inside the water, place a cork. So cork is like this. Okay, place a cork. ठीक है, नाउ दिस कॉर्क विल फ्लोट ऑन द वाटर। कॉर्क क्या करेगा, कॉर्क हल्का होता है तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। नाउ पास द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू दिस कॉर्क, मैग्नेटाइज्ड नीडल को कॉर्क से पास करना है, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, ये क्या है, ये मैग्नेटाइज्ड नीडल है। सो दिस इज द मैग्नेटाइज्ड नीडल, यू हैव टू पास दिस मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू दिस कॉर्क। नाउ इसके बाद आप क्या देखेंगे कि कॉर्क जब अपनी रेस्ट पोजीशन पे आएगा, देन मार्क दैट पोजीशन एज अ नॉर्थ एंड साउथ। So this is how the magnetic compass is ready. Understood, students? So magnetic compass is used to find direction. Now move to the next topic, that is interaction between the poles of magnet. Next topic is interaction between poles of magnet. Poles of magnet. We know, students, we all know that there are two poles of magnet, one is north pole and another one is south pole. So how these two poles interact? So suppose this is a magnet, this is the magnet, this is one magnet, okay, and this is another magnet, okay, students. Now there are two poles of on magnet, so one is north and another one is south. So here it is also north and this pole is south pole. So when the two poles of magnet come closer to each other, when the two poles of magnet come closer to each other, it means that they are attracting, the two poles are attracting to each other. So this is the south pole and this is the north pole. The south pole of one magnet attracts to north pole of another magnet. So it means that the opposite poles opposite opposite poles opposite poles attract each other. Okay, opposite poles attract each other. But what happens if the poles are similar? See here, if the poles are similar, then what happens? If the poles are similar, this is north pole, this is south pole, this is south, this is north. So if the south pole of one magnet and south pole of another magnet are come closer to each other, what happened? They are repelling each other. So like poles
repel each other. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. Understood, students? So let us study the like poles and unlike pole. How the like poles repel each other and how unlike poles attract each other. So here I have two bar magnet. Okay, so end of the bar magnet. So one end of the bar magnet is pointed with a white mark, and here also the one end of this bar magnet is pointed with white mark. Now let us see what happens if both the mark come closer to each other, then what happens. See, दिस इज व्हाइट मार्क. अब मैं व्हाइट मार्क को क्या कर रही हूँ, इस मैग्नेट के पास लेके जा रही हूँ. तो ये क्या हो रहा है, सी, सो मैग्नेट क्या हो गया, व्हाइट मार्क इज अट्रैक्टेड टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द अदर बार मैग्नेट. ठीक है, so it means that the unlike poles attract each other. Understood? And like poles repel each other. आप देख सकते हैं, देखिए व्हाइट मार्क, इस बार मैग्नेट का व्हाइट मार्क यहाँ पे है और इस बार मैग्नेट का व्हाइट मार्क इधर पे है. तो व्हाइट मार्क ने अपोजिट पोल के मैग्नेट को अट्रैक्ट किया है. Understood, students? What are the properties of magnet? Let us see in short. So properties of magnet. Properties of magnet. So first property of magnet is magnet shows attractive property. Magnet shows attractive property means what? It attracts that material which contains iron. Okay. Next properties, magnet shows directive property. Directive property means what? Magnets always comes to rest in north-south direction. Magnet always comes to rest in north-south direction. अगर ये दो डायरेक्शन पता है तो हम other two directions we can find easily. Okay. Next, third property, magnet always exist in pairs. ओके, मैग्नेट हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ. गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट like poles means what? Like poles means north and south. So like poles repel each other. Like poles repel each other. Okay, and unlike poles, that is north-south and south-north, attract each other. So this is the property of magnet. Now we will see how the magnet can lose its magnetic property and what that term is called. So let us see demagnetization. This is our next topic. Next topic is demagnetization. So what is demagnetization? Demagnetization is the process of destroying the magnetic properties
properties of magnet of magnet is called डीमैग्नेटाइजेशन. तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना ही डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है. सो हाउ द मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो देयर आर वेरियस वेज. सी, by striking magnet on a hard surface. So in that conditions magnet lose its magnetic property. Second, by hammering. by hammering हैमरिंग से भी, हैमरिंग मीन्स हथौड़ा मारना. अगर मैग्नेट पे हथौड़ा मारा जाए तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है. थर्ड, बाय बीटिंग. बाय बीटिंग बाय बीटिंग मीन्स व्हाट, अगर मैग्नेट को पटका जाए तो भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो सकती है. फोर्थ, बाय ड्रॉपिंग. बाय ड्रॉपिंग, अगर मैग्नेट को काफ़ी ऊंचाइयों से गिराया जाए तो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज हो सकती है. एंड फिफ्थ वन, बाय सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन. सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन. self demagnetization. So what is this self demagnetization? Self demagnetization मतलब when the two poles of magnets are left free. अगर मैग्नेट के दोनों पोल्स को फ्रीली छोड़ दिया जाए तभी भी धीरे धीरे मैग्नेट लूज इट्स प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड. सो एंड वन मोर थिंग, सिक्स्थ वन, बाय हीटिंग. By heating also magnet lose its property. Understood students? So how can we avoid self demagnetization of the magnet? So let us see how can we care of the magnet, how can we take care of the magnet. So this is our next topic, that is caring of magnet. So next topic is caring of magnet. Caring of magnet. So to avoid self-demagnetization, magnets are kept in such a way that opposite poles of magnet of magnet magnet are joined joined by placing soft iron keeper. Soft iron keeper. Okay, and one more thing, wooden box is placed in between two bar magnets. Two bar magnets. Two bar magnets. Okay, let us see this figure. See, this is one bar magnet. This is another bar magnet. So these two bar magnets are the opposite poles of these magnets are joined by placing soft iron keeper. So soft iron keeper. This is the soft iron keeper. Okay, this is soft iron keeper. तो ऑपोजिट पोल्स, मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं उनको किन से ज्वाइन किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कीपर से ज्वाइन किया जाता है. क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म नहीं होगी. अगर यही सॉफ्ट आयरन कीपर नहीं होगा तो क्या होगा, slowly this magnet will lose its magnetic property. And one more is wooden box is placed in between two bar magnets. So this is one bar magnet, this is another bar magnet. So wooden box is placed in between two bar magnets. So this is a wooden box. Okay, so wooden box is placed in between the two bar magnet. Understood students? This is how we can take care of the magnet. Now the last topic of this chapter, where the magnet is used, or what are the uses of magnet. So uses of magnet. This is the last topic of the chapter where the magnet are used. So magnets used in electric
मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में मैग्नेट का यूज किया जाता है. सेकेंड, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर. Okay, next, used in audio video cassettes, audio video cassettes, used in speakers and microphone, and also it is used in cranes, used in cranes आपने देखा होगा. क्रेन क्या करता है? It collects the heavy or it collects iron objects from heap of garbage. कचरों के ढेर से जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट. Okay students, so I think I have covered all the topic of this chapter. If you have any problem, you can ask me. Okay students, now we will meet in our next class with new chapter. So that's all for today's class. Have a nice day.